Let us see the next question. Consider following information. Information is provided for security X and for market portfolio. Year-wise, we have been provided with the return of the security and return of the market portfolio. You are required to answer following simple questions. The first question is, calculate the expected return based on CAPM for security X. It is given a name as RJ. It is given a name as expected return on risk. It is given a name as required rate of return. If risk-free rate of return is 2%. I request you to go through the question, please. Dear students, over here, the very first thing that we are supposed to do is calculation of the beta of the security. Calculation of beta for the security X. We understand that the beta of the security can be calculated. So using the formula for the covariance of the security with market divided by the variance of the market portfolio. With that, the beta of the security is 1.0357. At the same time, we can use the formula for the correlation coefficient, and based on that, we can make the computation of the R and we can compute the beta. That is the first thing that we are supposed to do. That is the calculation of the beta of the security. So beta for the security X is 1.0357 based on the calculation that we have done. Now, अभी हम लोग समझते हैं, let's say how to make the calculation of required rate of return. As far as the required rate of return is concerned, it is calculated by using a formula like this. It is risk-free rate of return plus beta into RM minus RF. Let me give explanation of this formula to you. Dear students, question में हमको RF का information दे रखा है. RF is 2%. Beta हमने calculate किया 1.0357. And in the process of making calculation of the beta, हमने return on the market portfolio भी find करके रखा है. This ember calculation is what we understand is the return on the market portfolio. That is, in this example, it is 12%. So return on the market portfolio is 12%. Now let us have understanding of the formula. Required rate of return is calculated like this. It is risk-free rate of return 2%. Beta 1.0357 into 12 minus 2. So 2 plus 1.0357 into 10. So 2 plus 10.357. That comes to 12.357. That is the way the required rate of return is calculated. अब इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं. We understand that over here there is a term called additional risk. And there is a term called additional return. देखो CAPM क्या कहता है कि एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी, तो आपको एटलीस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मिलना ही चाहिए. सो फॉर्मूला स्टार्ट्स विद RF प्लस एडिशनल रिस्क और एडिशनल रिटर्न. अगर मैं मार्केट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता हूं, देन इन दैट केस इन कंपैरिजन टू द रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना एडिशनल रिस्क है? 1 माइनस 0, 1 यूनिट का एडिशनल रिस्क है. और 1 यूनिट का एडिशनल रिस्क मुझे कितना एडिशनल रिटर्न जनरेट करके देता है? RM माइनस RF 12% का रिटर्न जनरेट करता है इंस्टेड ऑफ 2%. यानी मुझे वो 1 यूनिट का एडिशनल रिस्क है ना, वो मुझे 10% का एडिशनल रिटर्न जनरेट करके देता है. ना बीटा ऑफ द सिक्योरिटी
माइनस बीटा ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी में जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिस्क इन कंपैरिजन टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी कितना ज्यादा है, 1.0357। तो जितना ज्यादा रिस्क है ये सिक्योरिटी में इन कंपैरिजन टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी, मुझे इतना एडिशनल रिटर्न चाहिए। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, उसका कैलकुलेशन होता है 1.0357 इंटू 10। 10 का आंसर कैसे आया, 12 माइनस 2। So we understand it is beta into RM minus RF. This is the additional return which is required by the investor over the risk-free rate of return. So यहाँ पे हम लोग required rate of return कैसे find करते हैं? It is risk-free rate of return plus additional return required, that is beta into RM minus RF. So beta is 1.0357 into RM minus RF. This is the additional return required over the risk-free rate of return. So overall required rate of return कितना हो जाएगा, 12.357. That is what we understand. So let us write down the final answer. In order to compute a required rate of return comma we need information about A, risk-free rate of return, B, beta of security, C, return on market portfolio. Full stop. Return answer now. Required rate of return is equal to RF जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है, बीटा जो हमने कैलकुलेट किया, RM जो हमने कैलकुलेट किया, 2 plus 1.0357 into 12 minus 2, 2 plus 1.0357 into 10, 2 plus 10.357, that comes to 12.357. That is the way we are supposed to make the calculation of answer. You may write this if at all you want to write, only for understanding purpose. Otherwise जो हमने आंसर लिखा है that is sufficient from examination point of view. Second part of the question. The question says that say based on CAPM advice whether Mr. A should purchase the security, that is a question. तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है that say CAPM के मुताबिक सिक्योरिटी को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. Let us answer the second part of the question. Calculation of alpha of security. Okay. Alpha का calculation कैसे होगा? Alpha is calculated for decision making. It is x bar minus required rate of return. X bar का मतलब क्या है? The kind of return that say you are expecting to generate if at all you make investment in the security. देखो, in process of making calculation of the beta हमने already x bar calculate कर लिया है. And x bar is 4%. हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि on an average जो return generate हुआ है security से over the past number of years
that itself is the return that the security is likely to generate in future. So answer would be found as 4% minus required rate of return 12.357. So it is negative 3.57, 8.357. That is the way the alpha is calculated. I want you to answer in the chat box कि क्या ये security buy करेंगे? We understand that say since alpha is negative, we should not buy the security. Got an answer? Do not buy security, comma, since alpha is negative. Friends, over here we understand once again that जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया वो कुछ ऐसा है, लॉजिकली हमको ऐसा समझना है कि इतना रिटर्न हमको सिक्योरिटी में से चाहिए, इतना रिटर्न हमको सिक्योरिटी में से मिलने वाला है, जो रिटर्न मिलने वाला है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, इसलिए हमको सिक्योरिटी बाय नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन CAPM advise Mr. B whether Mr. B should continue to hold the security. तो वापस हमको ये बताना है that say whether you should continue to hold the security. The answer is no. Why? Because again the alpha is negative. आपके पास सिक्योरिटी है पर सिक्योरिटी का जितना रिस्क है ना उस हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है. So you should not say hold the security. Third question का आंसर, investor should not hold security because alpha is negative. उससे मैं लिखवा आगे, existing investor should sell the security. This is what we understand. Next question, plot the above values on a graph paper. So we are required to draw diagram. Friends, in the diagram again on x-axis we will take an independent factor, and the independent factor is in form of the beta of the security. Beta 0, then in that case the return expected is equal to RF. The line goes like this. This is given a name as security market line, SML. Security market line. We can say that this is beta 1. At that time, required rate of return is equal to RM. And again, this is beta 1.0357. 1.0357. At that time, the required rate of return is equal to 12.357. That is the way the beta of the security can be calculated. The required rate of return and based on that beta. So on x-axis we have independent factor called beta, and on y-axis we have dependent factor, that is the return.
लेट अस हैव द समरी ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। हमको पहले क्वेश्चन में ये पूछा है दैट से कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल फॉर्मूला यूज किया, RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 12.357। उसका लॉजिक इंपॉर्टेंटली ऐसा है कि अगर मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं इंस्टेड ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तो ये 1 यूनिट के रिस्क के सामने मुझे 10% का एडिशनल रिटर्न मिलता है। ये सिक्योरिटी का रिस्क कितना है, 1.0357। रिस्क फ्री के सामने कितना एडिशनल रिस्क है, 1.0357। उसके सामने इतना एडिशनल रिटर्न मुझे चाहिए। दैट इज द वे वी हैव द फॉर्मूला, दैट इज बीटा इंटू RM माइनस RF इज अ काइंड ऑफ एडिशनल रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी। तो उसका कैलकुलेशन में किया 10.357 ओवर 2%, सो ओवरऑल इट इज 12.357। डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग सिंपल अल्फा कैलकुलेट करेंगे। अल्फा नेगेटिव है तो हम लोग मना करेंगे, दैट्स अ सिक्योरिटी बाय नहीं करना चाहिए। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो हम लोग हाँ बोलते हैं। अल्फा नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो उसको बेच दीजिए। फिर ये डायग्राम है इन विच वी अंडरस्टैंड एट से बीटा 0, in that case the required rate of return is equal to RF, beta 1, in that case the required rate of return is equal to the return on the market portfolio। ये सिक्योरिटी x का बीटा है जो कि 1 से ज्यादा है, then in that case the required rate of return would be proportionately more, that is 12.357। that is what we understand।